हाय, आई एम प्रिया शर्मा। आज हम बनाएंगे केसर बासुंदी। इंडियन खाना मीठे के बिना अधूरा है और गुजराती थाली बासुंदी के बिना अधूरा है। चलिए बनाते हैं केसर बासुंदी। इसके लिए हमें चाहिए दूध। Now we'll wait till the milk boils and add the other ingredients later. Once the milk comes to a boil, lower the heat and then keep stirring continuously. Add the sugar. Now we'll add saffron soaked in water. Now we'll add cashews and the almonds and some pista. Once it reaches the appropriate consistency, add the cardamom. तैयार है हमारा केसर बासुंदी. Do try it at home and let us know how you like it in the comment section below. For more such recipes, please like, share and subscribe.